सम ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल टाइम। भाई हम जो सेलिब्रेट करते हैं इतने सारे गोल्स मारे, दोज आर लेजेंड्स ऑफ ऑल टाइम फॉर अ रीजन। यू नो व्हाट, दोज स्ट्राइकर्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट द लाइक्स ऑफ द ओरिजिनल रोनाल्डो नजारियो, R9, राउल, Henry, Drogba, Samuel Eto'o, Crespo, Shearer, Rooney, Van Nistelrooy, Andrei Shevchenko and Pippo Inzaghi। और ये सब लेजेंडरी नेम्स, यू नो व्हाट, उनके क्लब करियर में दे हैव गॉट बिटवीन व्हाट 250 से 350 गोल्स के बीच में, एंड दैट इज लाइक वाओ, व्हाट अ करियर, राइट, व्हाट अ करियर। एंड यस, ऑलमोस्ट ऑल हैव प्लेड भाई बिटवीन से 600 and 800 मैचेस एज वेल। तो आप देख सकते हो दैट इज द रिटर्न ऑफ अ टॉप क्लास स्ट्राइकर। लेकिन व्हाट अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो? डू वी सेलिब्रेट हिम इनफ? डू वी सेलिब्रेट हिम एंड मेसी इनफ? यस, बहुत सारा सेलिब्रेशन होता है, बट एट द सेम टाइम इतना सारा ट्रोल होता है। डू दे डिजर्व इट? बिकॉज यस, इट हैज हैपेंड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज स्कोर्ड, फॉर दोज ऑफ यू बाय चांस आपको नहीं पता अभी तक, ही हैज स्कोर्ड द 700 क्लब करियर गोल। और जो मैं नाम लिया ना इतने सारे, they have scored maybe in division 2 as well included. This guy has done at the topmost division in the top 5 to 6 leagues in the world, and that is the reality। एकदम गोट है भाई, मैं तो बोलता हूँ, despite being an opposition fan, and that is something I always say। but उसी नोट पर I have to discuss about the Sunday, because that was एक massive drama filled Sunday मेरे लिए। For me, arguably you had the match of the season इन दिस पर्टिकुलर डे, और हम बात करेंगे उसके बारे में, बट बने रहना लास्ट तक। ऑफ कोर्स, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। Also, do not forget to like, share, subscribe, and yes, we are live later today, and that's for the UCL talks, like we always do on most of the Mondays. भाई लेकिन going on that day, क्या ड्रामा फिल डे क्यों था? Because for me, yes, क्रिस्टियानो की बात करेंगे, मैनचेस्टर की बात करेंगे, लेकिन I think we have to start with Arsenal versus Liverpool। यस, मैं एंटिसिपेट किया था, वी डिड डू द वॉच अलोंग ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, लेकिन आई बिलीव सो दैट दिस वाज अ मैच जहां हमें पता लगता, स्पेशली आर्सेनल हु हैव लॉस्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड रिसेंटली, विल दे कम बैक एंड बीट अ बिग टीम नाउ, एंड लिवरपूल एज वेल। भाई मतलब दे हैव बीन इतना सारा प्रेशर से डील कर रहे हैं क्लॉप, यू नो दैट। लास्ट मैच उनका था 3-3 अगेंस्ट ब्राइटन, एंड नाउ इवन आर्सेनल हैड टू कम बैक एज वेल, लेकिन डिड दे कम बैक एंड हाउ? ड्रामा क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज यस, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। इतना नहीं बोलूंगा कि इट वाज विदाउट कंट्रोवर्सी, बट यू हैव टू से लिवरपूल डिफेंस वाज स्लीपिंग। और यस, क्लॉप डिड स्टार्ट विद 4-2-3-1 एंड मैच कर रहे थे आर्सेनल का लाइनअप, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, Alexander Arnold, as much as he's great going forward defensively, he is a liability. Also, you can argue why Virgil van Dijk has not been having the best of seasons, and Henderson literally missing hai. He's not that defensive element cover for Arnold जो होते थे in the past. So there are a lot of issues in that. तो कहीं तो fix करना है उन्हें, because that first goal that Martinelli scored, भाई Martinelli, ट्रस्ट मी, ओडेगार्ड ब्रिलियंट थ्रू पास अगेंस्ट मार्टिनेली, आई हैव टू से इट। और मैं खुद अपना हाथ ऊपर करूंगा, बिकॉज मैं बोला था ये बंदा बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन है। यस, ही हैज स्कोर्ड इन द पास्ट अगेंस्ट चेल्सी एज वेल, मुझे पता है दिस गाय हैज ट्रिकरी एंड पेस, वो फॉरवर्ड लाइन में खेल सकता है प्रॉपर, लेकिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो आर्टेटा ने किया है उसके साथ इस बार, भाई नेक्स्ट लेवल। आई थिंक दिस गाय कैन बिकम अ ग्रेट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग इफ ही कीप्स हिज फिटनेस। I believe मेरे लिए वो मैन ऑफ द मैच था। आप बोलिए who was the man of the match overall, but having said that, I must say लिवरपूल की फॉरवर्ड लाइन भी काफी अच्छी थी। I was impressed, yes, surprisingly Nunes started, लेकिन Nunes काफी अच्छा किए थे। Firmino who came on for injured Luis Diaz who also did well, मतलब मेरे लिए that pressing was good। Jota जो after Luis Diaz went off, obviously not great for Liverpool, लेकिन with Jota being on the left hand side, you know that you're going to get more, और वही हो रहा था। प्रेसिंग काफी अच्छी थी लिवरपूल की डिस्पाइट द चेंज ऑफ फॉर्मेशन, फिर भी आर्सेनल काइंड ऑफ डिस्पाइट लिवरपूल गोल्स was coming back yet again, और वही हो रहा था with लिवरपूल डिफेंस not being there। लेकिन टॉकिंग पॉइंट क्या था? ड्रामा क्यों? क्योंकि it was basically that first half में I think there was a penalty appeal against Gabriel जो on the night wasn't too great in my opinion for a change of Arsenal, लेकिन हैंडबॉल क्या था? इन माय ओपिनियन इट वाज, हाँ, हैंड वाज अवे फ्रॉम द बॉडी, यस, बहुत ही कम टाइम था बिटवीन द बॉल एंड द मूवमेंट ऑफ द हैंड, लेकिन यार द फैक्ट बीइंग दैट इट डिड चेंज डायरेक्शन, वो एक नेचुरल पोजीशन नहीं थी ऑफ गैब्रियल, सो आई थॉट वो पेनल्टी थी, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन वीएआर क्या बोलोगे, बट दैट इज अंडर द प्रॉपर स्क्रूटिनी। क्यों? क्योंकि वीएआर अगर रेफरी देता है गोल, देन दे काइंड ऑफ कीप इट, इफ दे डोंट गिव अ गोल, दे कीप इट।
क्लियर एंड ऑब्वियस वाला क्या है भाई, आपको लगता है तो दीजिए गोल, नहीं लगता तो मत दीजिए, दैट इज व्हाट इट शुड बी. एंड अगेन यू कैन आर्ग्यू दैट आर्सेनल की जो गोल, आई थिंक साका का गोल था, दैट्स द सेकंड गोल दैट स्कोर्ड, इवन दैट वाज ऑफसाइड, वो वाला आई एम नॉट टू श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई बिलीव वो आई ऑन द नेकेड आई इट लुक्ड गोल मेरे लिए. लेकिन अगेन लेटर ऑन भी आई थिंक जो पेनल्टी मिला आर्सेनल को, इट वाज बेसिकली गैब्रियल जेसूस काइंड ऑफ फॉलिंग लाइक अ चुई मुई. लेकिन सच में बोलूं दैट आई फेल्ट दैट कोई भी स्ट्राइकर होता उस सिचुएशन वही करता. तो वो मैं इतना नहीं बोलूंगा कि नॉट अ पेनल्टी फॉर श्योर. अगेन रेफरी ने दिया इसलिए वीआर चेंज नहीं किया, दैट इज सिंपल एज दैट. बट एनीवे ओवरऑल आर्सेनल डिजर्व टू विन, दैट इज द बॉटम लाइन फॉर मी डिस्पाइट द रेफरी टॉक्स. लेकिन लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड गेम बिकॉज drama did not end there. And yes, by the way, as things stand, Liverpool are just about in the top 10, lekin Arsenal are top of the table. Pains me to say it as an opposition fan, but you have to give it to them. Arteta is building things. Again, Manchester United का मैच था. Now that you know that Manchester United coming off a loss, huge loss against Man City, you can say, considering the rivalry. लेकिन भाई they were away to Goodison at basically a stadium. वहां पर atmosphere is a thing. और yes, Lampard recently defensively अच्छा कर रहे हैं, तो समथिंग हैड टू गिव, वहां पे समथिंग हैड टू गिव. तो वेरी वेरी मतलब सरप्राइजिंग नहीं बोलूंगा, लेकिन द फैक्ट दैट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे डिड नॉट स्टार्ट विद सैंचो. तो रैशफोर्ड, मार्शियल एंड एंटनी स्टार्टिंग. अगेन मार्शियल फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ही लुक्ड अ लिटिल बिट, आई डोंट थिंक ऑफ, ही लुक्ड ऑफ द पेस ऑलमोस्ट आई वुड से. लेकिन वो बाद में पता लगा क्यों, ही वाज इंजर्ड एज वेल. तो या ही वेंट ऑफ. लेकिन स्टार्टिंग में इट वाज इवोबी. एवर्टन की जो मिडफील्ड है ना, अभी आई एम टेलिंग यू, Idrissa Gueye, Onana और Iwobi is actually a very very good midfield. हाँ, Iwobi is playing as a midfielder जो काफी ड्रिफ्ट भी करते हैं because उनका नेचुरल पोजीशन था on the right hand side. But let's be honest, he is playing literally as a box to box midfielder. Or what a goal, bro! What a goal! Or JJ Okocha, the legend. Talking about legends in the beginning of the video, but he was there in the stadium. जो अपेरेंटली इवोबी के ही अंकल है. बट कोई नहीं, मूविंग ऑन. आई थॉट एवर्टन विल बिल्ड ऑन दैट क्योंकि फर्स्ट फ्यू मिनट्स इट वाज ऑल एवर्टन. भाई फिर क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाई डिड दे गो इनटू द शेल? क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक पे अटैक पेल रही थी भाई. डिएगो डालो और ही वाज डूइंग वेरी गुड. एंड यस, मैंने मिस कर दिया, कैसेमिरो वाज स्टार्टिंग इन दिस गेम. तो विद कैसेमिरो स्टार्टिंग एंड ऑफ कोर्स मार्शियल वेंट ऑफ, जिनको इंजरी हो गई थी, रोनाल्डो केम ऑन. एंड यस, होना ही था भाई. Casemiro and Ronaldo kind of really was having some tuning बढ़िया. लेकिन I would say उससे भी पहले एंटनी का बहुत ही बढ़िया गोल. और एंटनी has now I think the first Manchester United player ever to score in 3 back-to-back Premier Leagues in his first 3 starts. Wow, that's awesome, bro. I must say Antony, I was a fan as well. लेकिन हाँ, let's see how he does in the future matches. मेरे ख्याल से काफी अच्छा प्लेयर है और काफी अच्छा गोल्स मारते हैं. तो नाइस गोल बाय एंटनी. लेकिन लाइक आई सेड, कैसेमिरो he had a good chance. Yes, वो रन कर रहे थे इन द बॉक्स, कितने बार होता है वो, लेकिन he had a good chance. फिर भी I was hoping that Everton kind of, as an opposition fan, I was hoping that Everton kind of keep Manchester United at bay somehow. लेकिन नहीं, रोनाल्डो का होना ही था. द मोमेंट केम. और इस बार सू नहीं किया उन्होंने. He was like very calm and Antony gave him support in the celebration. But what a goal, yeah. Typical Ronaldo goal, a very good goal for a 700 goal. Plus the fact that wo turned out to be the winner. So you have to give it to the GOAT here, Ronaldo, absolutely. हाँ, later on Rashford did get a goal, offside करार दिया गया. Obviously because the जनता को मालूम है भाई कि Rashford मेरे FPL टीम में थे. So it's quite obvious, right? वो rule out हो जाएगा. But कोई नहीं. On a serious note, again, लास्ट में रफाइल वरान, मैकटोमिने केम, एवर्टन बहुत ही बॉम्बार्ड किए, फाइनली कॉर्नर जीते एंड ऑल दोस थिंग. डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन आए, but I don't think that was enough. And Everton, they're looking good at home at least. लेकिन हाँ, you have to say top 4 रेस अभी जारी है. I don't think it is done for Chelsea and Spurs as well. Manchester United kind of are there coming up slowly but steadily for sure. तो देखते हैं क्या होता है. But again, drama little bit also in the Barcelona match because Barcelona Celta Vigo में drama really. Yes, Pedri scored a good goal. I think Gavi का attempt था and Pedri kind of got the rebound of the defender of Celta Vigo. लेकिन ये इतना बोलूंगा जरूर, मेरे लिए ड्रामा क्यों था भाई? मार्कोस अलोंसो started as center half. How did he do? आप बोले नीचे. लेकिन more than that, I thought it was a very good performance by PK and Ter Stegen. तो मार्कोस अलोंसो also center half. भाई प्री सीजन नहीं देखा था उनको चेल्सी के साथ सेंटर हाफ में खेलते हुए. But that's brilliant, bro. I know बार्सिलोना बहुत सारी इंजरीज, हम बात करेंगे आज शाम को. Of course, we are covering the UCL and a lot more. Till next time, take care. And again, do not forget to hit that like and subscribe. It's a fan channel for all to see. Always will be the Premiership race as well as the La Liga race is on. Trust me on that.